सगळ्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या श्रोतेवर्गांना कुतुल शाळेच्या वतीने मी देवकुमार अहिरे नमस्कार करतो आणि सगळ्यांचं कुतुल शाळेच्या या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो. आज आपण प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब यांच्याविषयी चर्चा करणार आहोत आणि आजच्या आपल्या या व्याख्यानामध्ये आपल्यासोबत डॉक्टर नदीम रिजावी सर आहेत, ते आपल्यासोबत चर्चा करणार आहेत. मी 1-2 सेकंदांमध्येच आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचं स्वरूप कसं असणार आहे ते सांगतो. प्रथम कुतुल शाळेच्या वतीने आमचे सहअध्यायी किशोर मोरे हे किशोर मोरे किशोर मोरे हे कुतुल शाळेची ओळख करून देतील. त्यानंतर आमचे मित्र राहुल मगर हे ज्यांच्याविषयी आज आपण चर्चा करणार आहोत ते प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब यांच्याविषयी काही सांगतील. आणि त्यानंतर मग प्रमुख वक्ते आहेत डॉक्टर नदीम रेजावी सर यांच्याविषयी मुफीद मुजावर बोलतील आणि मग प्रोफेसर नदीम रेजावी सर आपल्यासोबत इरफान हबीब यांच्याविषयी बोलतील आणि त्यानंतर आपण काही प्रश्न उत्तर देणार आहोत. आणि आजचं आपलं जे लेक्चर असणार आहे ते प्रामुख्यानं हिंदुस्थानी या भाषेमध्ये असेल. आज आपल्या या इतर लोक सुद्धा जोडली गेलेली आहेत आणि त्याच्यामुळे आपण हिंदुस्थानी भाषेमध्ये आजचं व्याख्यान घेणार आहोत. नेहमी आपण मराठी भाषेमध्ये कुतुल शाळेची सगळी चर्चा घेत असतो, पण आज आपल्या या व्याख्यानाला अमराठी बरेच अभ्यासक आणि विद्यार्थी पण आहेत, त्यामुळे आपण हिंदुस्थानीमध्ये घेणार आहोत. आता मी आमचे मित्र किशोर मोरे यांना कुतुल शाळेची ओळख करून देण्यासाठी निमंत्रित करतो. किशोर. नमस्कार सर्वांना. आज देवकुमारने सांगितलं तसं की आज आपलं जे भाषण किंवा आपलं लेक्चर असेल ते हिंदुस्तानी या भाषेमध्ये होणार है। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी हमारे आज के इसमें मराठी दिख रहे हैं, तो इसीलिए ये मराठी में हमारा कुतूहल शाला ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये मंच क्या है, उसकी मैं पहचान कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्तमान दौर में इतिहास विषय को लेकर बहुत सी बहसें, चर्चा विमर्श और उसकी राजनीति का दौर भी है, जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। हालांकि इतिहास को मद्देनजर रखकर वर्तमान की परिभाषा करना, उसे नए सिरे से समझना, यह हमारी ऐतिहासिक जिम्मेवारी भी है। मगर बहुत सी उलझने और नए सवाल इतिहास की गलत धारणा की वजह से भी तैयार होते हैं और हो रहे हैं। इस उलझन को सुलझाने का एक प्रयास और इतिहास के प्रति एक व्यावसायिक, तार्किक और वैज्ञानिक तरीका अपनाने की पेशकश करना एक छोटा सा प्रयास है, जो कुतूहल शाला इसका है, जिसे हम इतिहास संबंधी जनशिक्षा केंद्र के रूप में भी देख रहे हैं। और कुतूहल शाला भारत की प्राचीन चर्चा विमर्श की परंपरा को उजागर करने की एक पहल करता है, जिसमें अन्य चर्चा, मतभेद, संवाद, विचारों का आदान प्रदान करना शामिल है। और इसी के साथ ही इतिहास का धर्मनिरपेक्षता, समता और अन्य मानव मुक्ति संबंधी विचारधाराओं को केंद्र में रखकर व्यावसायिक अभ्यास करना भी एक कुतूहल शाला का एक लक्ष्य है और जो इसमें अपेक्षित है। कुतूहल शाला यह संकल्पना जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास से ली गई है और रोमिला थापर के जो वर्क है उसमें भी हमें बहुत सारी जगह पर जिस प्राइमरली बौद्ध कालखंड के बारे में जो भी लिखान है, जो भी लेख है, उसमें हमें बौद्ध कुतूहल शाला यह शब्द मिलता है, जिसमें समाज विषयक विचार विमर्श प्राचीन भारत के नगरों में होता था। मुख्य तौर पर बौद्ध काल में इस तरह की कुतूहल शाला हर नगर में पाई जाती थी, जिसमें विद्वान चिंतक अपने विचार पेश करते थे और बहस का भी अवसर देते थे। विश्व इतिहास में भी हम इस तरह के प्रयोग, इस तरह का चर्चा विमर्श का मंच देख सकते हैं, जो प्रबोधनकालीन चित्र में भी पाता है। जैसे कि राफेल का प्रबोधनकालीन जो चित्रकार था राफेल, उसका स्कूल ऑफ एथेंस हो, मध्ययुगीन कालखंड के और या अकबर काल का इबादत खाना हो, या 12वीं सदी के डेक्कन के महात्मा बसवेश्वर का अनुभव मंडप हो, इस तरह के मंच हम भारतीय और वैश्विक इतिहास में भी देखते हैं। और कुतूहल शाला का
का एक जो लक्ष्य है वो इसी तरह की विचार विमर्श की परंपरा को उजागर करना, उसे पुनरुज्जीवित करना और वर्तमान दौर में जो भी इतिहास को तोड़ मरोड़ हो रही है उसे एक तरह से एक आह्वान देना या उसे एक तरह से सही राह पर लाना, ये कुतूहल शाळा का एक उद्देश्य है। और इस तरह से हम गए एक साल भर से हर अलग अलग इतिहासकार, विद्वान जनों, चिंतकों से इतिहास के बारे में और वर्तमान की श्रृंखला को जोड़ने के बारे में चर्चा विमर्श कर रहे हैं। यहाँ पर मैं रुकता हूँ, आगे का सूत्र देव कुमार संभालेंगे। आता ज्यांच्याविषयी आज आपण बोलत आहोत ते प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब यांच्याविषयी 2 शब्द बोलण्यासाठी मी आमचे कुतूहल शाळेचे सहध्यायी मित्र राहुल मगर यांना निमंत्रित करतो। राहुल। आता राहुलकडे थोडी एक तांत्रिक अडचण आलेली आहे, त्याच्याकडे इंटरनेट जात आहे, तर आपण पुढचा जो मुद्दा आहे त्याविषयी बोलूयात। मी आता आमचे मित्र मुफीद मुजावर यांना विनंती करतो की आजचे आपले जे प्रमुख व्याख्याते आहेत डॉक्टर नदीम रिजावी सर त्यांची ओळख करून करण्यात यावी। मुफीद। मुफीद यू आर नॉट ऑडिबल। हा, नाही तुझा आवाज येत नाहीये। नाही नाही। देव 1 मिनिट थांब, मी माझा फोन देते मुफीदला। मुफीद आता बोलून बघ। मुफीद आता बोलून बघ तू। सॉरी फॉर इंटरप्शन झालं। सर्वांना नमस्कार। आज दिनांक 3 एप्रिल 2022 रोजी कुतूहल शाळा आयोजित प्रोफेसर इरफान हबीब आणि प्रोफेसर रोमिला थापर गौरवार्थ विशेष व्याख्यानमाले मधील दुसऱ्या व्याख्यानासाठी प्राध्यापक डॉक्टर सय्यद अली नदीम रेजावी हे व्याख्याते म्हणून आपल्याला लाभले आहेत। प्राध्यापक डॉक्टर सय्यद अली नदीम रेजावी सर हे अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ अलीगड येथील इतिहास विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असून त्यांनी सदर इतिहास विभागाचे विभाग प्रमुख हे पद देखील काही काळ सांभाळले आहे। प्रोफेसर सय्यद अली नदीम रेजावी यांना अनेक वर्षाचा अध्यापनाचा आणि संशोधनाचा अनुभव आहे। अलीगड मुस्लिम विद्यापीठातील मुसा दाफरी संग्रहालयाचे समन्वयक म्हणूनची जबाबदारी देखील त्यांनी पार पाडली आहे। या व्यतिरिक्त अलीगड विद्यापीठातील अनेक प्रशासकीय पदे सरांनी भूषवली आहेत। प्रोफेसर रेजावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक विद्यार्थ्यांनी एमफिल आणि पीएचडी चे संशोधन पूर्ण केले आहे। इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस सारख्या अनेक महत्त्वाच्या अकादमिक संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या पदावर प्रोफेसर रेजावी कार्यरत असून जनरल ऑफ पीपल्स हिस्ट्री सारख्या अनेक प्रख्यात रिसर्च जर्नल्सच्या संपादन मंडळात देखील कार्यरत आहे। अध्यापनातील दीर्घ अनुभवासोबतच संशोधन आणि लेखनाचे प्रदीर्घ कार्य
प्राध्यापक सय्यद अली नदीम रेजावी यांनी केले आहे. अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ अलीगड येथील इतिहास विभागातून त्यांनी BA MA ची पदवी प्राप्त केली असून MPhil आणि PhD चे संशोधन देखील त्यांनी येथूनच पूर्ण केले आहे. प्रोफेसर सय्यद अली नदीम रेजावी यांचे अनेक ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत. फतेहपूर सिक्री रिव्हिजिटेड हे ऑस्कर युनिव्हर्सिटी प्रेस द्वारे प्रकाशित त्यांचं जे पुस्तक आहे ते 2013 मध्ये प्रकाशित झालं. हिस्ट्री थ्रू आर्किओलॉजी हे त्यांचं पुस्तक CAS डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री AMU येथून 2019 मध्ये प्रकाशित झालं. त्याचबरोबर तस्किरिया इफिर हासू तैली या सूरज सिंग रचित हस्तलिखित ग्रंथाच्या प्रकाशित आवृत्तीची प्रस्तावना आणि या सूरज सिंग या रचनाकाराचे चरित्र लेखन देखील सरांनी केले आहे. याशिवाय अलीगड विद्यापीठातील पुरातत्वीय वस्तूंच्या माहितीचे द्विखंडीय कॅटलॉग आणि मुघल चित्रांचे कॅटलॉग, लघुचित्रांचे कॅटलॉग तयार करण्याचे महत्वपूर्ण काम सरांनी केले आहे. याशिवाय मुसा दाखवी संग्रहालयाच्या वतीने अनेक सांस्कृतिक प्रदर्शनांचे यशस्वी आयोजन सरांनी केले आहे. याशिवाय अनेक नामवंत प्रकाशनांच्या संपादित ग्रंथांमध्ये, नामवंत संशोधन पत्रिकांमध्ये प्राध्यापक रेजावी यांचे लेख, पुस्तक परीक्षणे इत्यादी प्रकाशित झाले आहेत. तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय सेमिनार आणि कॉन्फरन्सेस मध्ये सरांनी शोध प्रबंधांचे वाचन केले आहे, सादरीकरण केले आहे. तसेच विशेष आमंत्रित म्हणून अनेक विद्यापीठांमध्ये, कॉलेजेसमध्ये व्याख्याने दिली आहेत. मोहम्मद अथर अली बेस्ट पेपर अवॉर्ड हे त्यांना 17व्या जे इंडियन हिस्ट्री काँग्रेसचं सेशन होतं त्यावेळी 2009 मध्ये, त्यावेळी त्यांना हा अवॉर्ड देण्यात आला. त्याचबरोबर प्रोफेसर JS गेरवाल बेस्ट पेपर अवॉर्ड इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री काँग्रेस 2003 चा हा देखील पुरस्कार सरांना देऊन त्याचा गौरव करण्यात आला आहे. लंडन आणि पॅरिस येथील नामवंत विद्यापीठांमध्ये विशेष आमंत्रित अभ्यासक म्हणून सरांनी भेटी दिल्या आहेत. मध्ययुगीन भारताचा इतिहास, नागरी आणि सामाजिक इतिहास, मध्ययुगीन वास्तुशास्त्र, लघुचित्रे इत्यादींचा सांस्कृतिक इतिहासाच्या अंगाने अभ्यास, भारतातील शिया पंथाचा इतिहास, मध्ययुगीन भारताचा पुरातात्विक अभ्यास हे प्रोफेसर अली नदीम रेजावी सर यांचे विशेष अभ्यासाचे विषय आहेत. प्रोफेसर इरफान हबीब यांची कर्मभूमी असलेल्या अलीगड मुस्लिम विद्यापीठ सारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठातून पदवीपासून PhD चे शिक्षण घेत असताना आणि नंतर तेथेच अनेक वर्ष अध्यापन आणि संशोधन करत असताना प्रोफेसर सय्यद अली नदीम रेजावी सर यांना सातत्याने प्रोफेसर इरफान हबीब यांचे मार्गदर्शन आणि सहवास लाभला आहे. प्रोफेसर इरफान हबीब हे व्यक्ती, शिक्षक आणि इतिहासकार म्हणून कसे आहेत हे जाणून घेण्यासाठी प्रोफेसर सय्यद अली नदीम रेजावी हेच योग्य वक्ते आहेत असे कुतूहल शाळेचे मार्गदर्शक चिंतक प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे यांनी सुचवले. त्यामुळे कुतूहल शाळा आयोजित प्रोफेसर इरफान हबीब आणि प्रोफेसर रोमिला थापर गौरवार्थ विशेष व्याख्यानमालेमधील दुसऱ्या व्याख्यानाकरिता प्रोफेसर इरफान हबीब व्यक्ती इतिहासकार या विषयावर व्याख्यान देण्याकरिता आम्ही प्रोफेसर सय्यद अली नदीम रेजावी सर यांना विनंती केली आणि त्यांनी होकार दिल्याने आज हे व्याख्यान आम्ही आयोजित करू शकलो आहोत. कुतूहल शाला के आयोजक की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर सय्यद अली नदीम रेजावी साहब का स्वागत करता हूँ और प्रोफेसर साहब गुजारिश करता हूँ कि वे अपना लेख करें. प्रोफेसर डॉक्टर सय्यद अली नदीम रेजावी साहब. Thank you, Mr. Mujawir, Dr. Mujawir, for this unnecessary, very long introduction. Most of it is not deserving, but thank you anyway. Unfortunately, I don't know Marathi, nor do I'm very comfortable in speaking Hindi.
So if you don't mind, I'll try to speak in English. In between, I might also try to use some Hindustani, but basically I would be speaking in English. I think most of the people who would join would be able to understand the language. First of all, thanks to the organizers of this program, Kotuhal Shala, a group from Maharashtra, and of course, many thanks to its office bearers, Dr. Dev Kumar Ahire, Dr. Gunjan Garu, Rahul Magar, Kishore More, Madan Varsharani Pandey, and of course, most of all, to Dr. Mufid Mujawar, who in fact contacted me. And these are the people who are holding this lecture series, which is very much needed today. And this lecture series, in my understanding, is to commemorate and felicitate the two, without doubt, greatest living legends of Indian history, Professor Romila Thapar and Professor Irfan. So I really thank all of you for holding these programs. Actually, I am also very thankful to my friend, Professor Anirudh Deshpande, who introduced me to this group and suggested my name to them for this occasion. I think no honor is greater than a chance to talk about one's own guru, the man who actually shaped you. I have not been chosen for the task to introduce Professor Irfan Habib, who actually needs no introduction. When we say Irfan Habib, actually we mean Professor Muhammad Irfan Habib, as we find written in his early certificates and early publications. And I don't think that I am chosen for that job because I can do justice either to his thoughts or to his historiographical approaches. I am probably here as I have been close to him and I have seen him from close proximity since the last 45 years or so. 45 years as his student, and more than that if you count my actual contact with him. After completing my higher secondary, my late father led me to him sometime in 1977. At that time, when my father took me to him, I found this handsome man leading a dharna and agitating along with his colleagues against the draconian policies of the government of the day. Remember, it is 1977. And from that day till now, I have never left his side. And probably that qualifies me to talk about the person today. Now, who is this man? And how is he different from other contemporary personalities of his time? Do we or should we celebrate him as he is a Padam Bhushan? An honor which was bestowed on him way back in 2005? No, I don't think so. There are so many
such awardees, and we know how sometimes politically connected people are also awarded. We should remember, Gandhiji never got a Nobel Peace Prize, but he is considered as the apostle of peace by the entire world. It is only some of us who are critical to him since the last few years. In my opinion, we celebrate Irfan Habib not because he's a historian who wrote many books on history. I mean, that is the job of the historians. Most of the historians do that. Then why do we celebrate? We celebrate him, in my opinion, as he's a progressive intellectual who is a leading role model for generations of students and scholars. An intellectual who has no qualms to call spade a spade and even criticize the most sacred if he thinks they are wrong. He never minces his words. All of us know that he's a Marxist historian. In fact, a die-hard Marxist. And if one reads his works, any work, you will realize that you cannot take out the Marxist convictions and approach from any of his writings. But his first seminal work, The Agrarian System of India, which he wrote as his PhD and got initially published in way back in 1963, was written to counter one of Karl Marx's misunderstanding of Indian history. He did not mince his words. He went on to disprove his idol. Marx had imagined the pre-colonial Indian society as an unchanging, moribund society with fixed class structures. Irfan Habib, in his book, using Marx's own tools, countered this viewpoint. Further, unlike many other equally famous scholars, Irfan Habib is never dogmatic about his own views. I mean, one may witness the 3 editions of his agrarian system. Whenever he found new evidence, he overhauled his own views very drastically. To him, the primary evidence had precedence over everything else. As he himself points out in one of his papers, which is entitled Problems of Marxist Historiography, published in the Social Scientist of 1988. Constant inquiry, self-examination, and the refining and extension of Marxist positions are the basic tenets of history writing. But then there are certain fundamentals in which he believes and which can never be shaken out of him. And they are his secular approach and aversion to and concession to any religiously fundamentalist approach. Communalism of any kind
is an anathema to which he never remains silent. And that is the two hallmarks of a great personality. Stand with the truth and never believe that whatever his own self is doing is final. If standing outside the department and agitating against the emergency of Indira Gandhi is my first remembrance of him, my second memory, which helped me shape my opinion about him, comes from 1979, the day Shah of Iran fled Tehran and Ayatollah Khomeini landed in Iran. A day after this event, a program was organized at Aligarh to commemorate the Iranian Revolution. The hall was full of people, a majority of whom were Iranian students. Irfan Saab was the main speaker. He started his speech by explaining the history of Iran and the atrocities which were committed by the Pahlavis. He talked about Mossadegh and how he was wrongly removed by Raza Khan. And while he spoke, the whole hall was clapping. And then he came to the point. Now that the Shah has left and kingship has ended, now what? And then he went on to say, if power devolves to the reactionary fundamentalist groups led by Khomeini, everything gained would be lost. And as soon as he said that, there was an uproar. The Iranian students were up in arms. Irfan Saab had to be escorted out to be safe. After some time, when things calmed down a little, Irfan Saab, after being advised pragmatism by his co-leftists at Aligarh, he was escorted back to the dais. He started from the same sentence. Once again, there was an uproar. He was again barely saved from being attacked. I mean, all of us who were there, we formed a shield to protect. And this happened twice more. By the fifth time, the sympathizers of Ayatollah Khomeini were tired out. But Irfan Habib stood the ground. No physical threats were going to make him change his views. And I knew here was a man who stood by his convictions and he could never be swayed. And this is the trait which I have come to identify him with. And this spirit was once again in the forefront when he faced the ultra-right and Muslim communalist onslaught at Aligarh Muslim University in 1980s, or even later on when he was confronted with the Hindu right from 1990 onwards till date. In 1980, he was suspended for his views by the then Vice Chancellor of Aligarh Muslim University, Sayyid Hamid, who suspended him to placate the Muslim fundamentalist groups who were baying for his blood. All type of pressures were built
on the Vice Chancellor to take action. And all type of pressures were built on Irfan Habib to stand back a little. But Irfan Saab was a person who stood with his convictions. He preferred suspension, but never agreed to accept what he believed was wrong. I must also say that in spite of his suspension, and even in the face of an ugly agitation against him, he kept on caring about his students. Those who had offered his courses, he took their classes from his home. He also told us to also keep attending the classes of the other teachers who had in his stead been assigned for those courses. Arey bhai, you will learn something of the alternate views, is what he told us. Probably that is why those days M.J. Akbar, the editor-in-chief of Sunday, one of the famous journals, weekly magazines which was being brought out those days, in one of his editorials in Sunday, M.J. Akbar wrote regarding Irfan Habib, a man amongst the pygmies at Aligarh. Irfan Habib's subsequent life after 1980s was to prove M.J. Akbar a bit off the mark. In fact, he was a giant amongst his contemporaries. These traits of Irfan Habib are probably inherited by him from his family. He was born in 1931 to Professor Muhammad Habib and Begum Sohela Habib, both strong individuals with, number one, firm secular credentials, and secondly, nationalist groundings. Sohela Habib, the mother of Professor Irfan Habib, was the daughter of Abbas Tayyabji, a close associate of Gandhi. Her great-grandfather was Badruddin Tayyabji, the third president of Indian National Congress. Muhammad Habib, the father of Professor Irfan Habib, and his grandfather, Muhammad Naseem, a lawyer, belonged to a small village near Lucknow known as Garhi Bhilwal. And both were hardcore nationalists. In fact, the senior Habib, Professor Muhammad Habib, is supposed to be not only a nationalist historian, but a person who introduced a Marxian approach in the writings of medieval Indian history. In fact, I would recommend each and every one of you to at least go through one of his books, Sultan Mahmud of Ghazna. That marks, the writing of this book marks the start of what
ultimately came to be known as the Aligarh School of Historiography. It would not be incorrect to say that Professor Muhammad Habib, the father, was the founder of what is known as Aligarh School of History, whose best example till date is Professor Irfan Habib. Now, Irfan Habib, besides being the best known historian of medieval India, is actually known for 2 or 3 very distinctive features, which are actually not common amongst all. These are his distinguishing features, which I find in him. Number 1, Irfan Habib is a historian who is an all-rounder. You cannot confine him only to one field or one time period. Unlike many greats who have confined themselves only in one small field of history, Irfan Habib has, and we will see after a few minutes, that he in fact tried to pick up his pen and write on each and every aspect of history which is possible. So if you call him as the historian of medieval India, you are mute. So mute. Yeah. Just Can you hear me now? yeah. So what I was saying is that if someone wants to confine Professor Irfan Habib and label him as the historian of medieval India, he would be wrong. But before I go into the details of that, let me come to the second distinguishing aspect of the person Irfan. And that is also something which is generally missing in most of us. All of us believe in self-preservation, self-promotion. And we do not take up or avoid taking up topics which are controversial. Irfan Habib, we find, is an active fighter against Muslim communalism, although he spent his entire life at Aligarh. From his school age, at a time before independence, when he was a student of the university school Minto Circle, at a time when the Aligarh campus was the hotbed of Muslim League. From then on to the present age, at a time when whenever the Muslim communists raised an issue or raised their head, we find Irfan Habib confronting them without any fear. In fact, even at a time when
He was in school. He opposed the Muslim League like anything. I mean, once when I was traveling with him from Aligarh to Delhi in a taxi, he was telling us about how at quite a few occasions he was hounded by the supporters of the Muslim League, who at one given time on the campus predominant. But Irfan Saab stood his ground. He stood his ground at a time when in 1980s, intense agitations by the Muslim fundamentalists took place against him. He never bowed before. And thirdly, sometimes, the Muslim communalist, I still remember, used to say, "Kare bhai, Irfan Saab to communist hai, anti-Muslim hai." I also remember a time when there were allegations that possibly he is very soft on the Hindus and very hard on the Muslims. But the third very distinguishing feature which we find in Habib is that he's a fighter and an opposer of the Hindu communalist agenda. It is not possible in one short lecture to discuss the entire life of Professor Habib. But here, in order to buttress my point that he has been a fighter against the communalism of both the sides, and especially the Hindu communalists, the majoritarian communalists, I would remind the learned audience of three facts. One, Irfan Habib's role in the Babri Masjid Ram Janambhoomi issue. At a time when he was the chairman at ICHR, at a time when he was holding an official position, even at that time, he was bold enough to strongly oppose the Hindu communalism as exemplified by the Ram Janambhoomi agitation which was carried. Suffice to say that the entire court case which was fought first at Allahabad and then ultimately at Supreme Court would have fallen in a day had it not been for Irfan Habib and his convictions of support, where he would help the people who were fighting against. Remember, Irfan Habib was not fighting for the mosque. To the historians, as exemplified in one of the, in Indian History Congress 1986, there was a first time resolution which was passed, moved by Irfan Habib, and that was that we consider the so-called Babri Masjid as representative of an age. It was a historical monument. And
It was the safety of the historical monument for which Irfan Habib was fighting. He was not fighting for the mosque per se. Almost the entire life of Irfan Habib has gone into the fighting against the Hindutva politics. I think all of us keep on reading the newspapers, and almost it is every other day when you keep on writing how Irfan Habib responds to each and every move which is being made by the Hindutva elements. Cases were filed against him. Threats were issued against him. But Irfan Habib just tends to speak the truth and nothing else. And of course, the third thing which we should remember about this person, that along with certain others, people like Romila Thapar, people like our Sharma ji, R.S. Sharma, people like D.N. Jha, people like a lot of historians. He organized every one of them and came up along with two other, editors, Aditya Mukherjee and Subira Jaiswal, a report and an index of errors in 2003 to the NCERT attempts to distort history. In fact, attempts to distort history as we know it were initially made in 2003. And along with Romila and others, Irfan Habib was at the forefront, opposing that move actively through his writings. Once again, when this present regime came up with the new education policy, and at a time when it attempts to change the syllabi of history courses, once again, we find Irfan Habib, Romila Thapar, and certain other such groups in the forefront against this fight against the politics to distort the view of history. Yes, do you want to say something? No, sir, no. Okay. Now, coming to the point that what Irfan Habib is written is not confined only to one field. I will just enumerate certain aspects. For example, the entire gamut of the Indian history, starting from ancient prehistoric period, of medieval, of course, modern period, history of Islam, history of Europe, history of capitalism, you name it, and you will find that Irfan Habib has taken up his pen to write on that. He wrote on Sir, unmute yourself. who mutes me? I mean, I am not doing anything. I mean, so please see to it that this doesn't happen. So, if you look at
I mean, basically, Irfan Habib is supposed to be a historian of economic history. But then his articles, his writings, his books on economic history are not confined only to the Mughal period. You have his books on economic history of modern India. You have his work on the Sultanate economic history. He has written very path-breaking articles on the currency system. Who can forget his Aziza Hassans and Shirin Musli's and a group of people writing on trimetallism, silver currency, bullion, so on and so forth. Then, of course, social history, technology, a series of articles on history of technology. I mean, for social history, I would just remind that it was he who first, saw to it that work on middle classes for that matter starts taking place. Historical geography. Who is not aware about Irfan Habib's contribution to that field? Sometimes we think that archaeology is beyond history. Here I'll just, if you look at the curriculum vitae of Irfan Habib, you will find that he has written a number of very good articles on archaeology as well. Forget about Babri Masjid, usko jo likha hai. Even apart from that. In fact, one of the archaeology centers at Kolkata was inaugurated by him, and there is a very good, a keynote address which was given by. But here I would like to just tell one personal story. As when I was being introduced, it was mentioned that I am the author of a book, Fatehpur Sikri Revisited. And at the time when I was working at Fatehpur Sikri, one day, Irfan Habib called me to his chamber and asked me, when you go next time, please go and survey the palace of Shah Jahan at Fatehpur Sikri. I said, Akbar is the capital of, the Fatehpur Sikri is the capital of Akbar. He said, no, I found in evidence that even Shah Jahan built a palace of Daulat Khana out there. And I said, now how am I going to hunt for that? He said, no issues. He took out a manuscript, the Padshahnama of Waris, took out the passage, 2 or 3 sentences which were written in the Padshahnama of Waris. He read them aloud. He said, read them between the lines. देखो इसमें क्या बताया जा रहा है. If you believe what Waris is writing, this place should be. Do you have a plan of Fatehpur Sikri? I said, yes, I have. He said, just spread it out. And he said, if you read this passage, देखो, this is the place where the possibility of you finding Shah Jahan's Daulat Khana would be. And to cut the matter short, when I went along with my team to Fatehpur Sikri, it was exactly at the location where Irfan Habib had pointed it out on the map that we were able to identify the Daulat Khana of Fatehpur Sikri, which was constructed by Shah Jahan. Still survives.
with typical, decorations on the walls, which you find at the Taj Mahal and other Shah Jahan buildings. So, isse aage, or I won't say much about his, perception about archaeology. I mean, you look at the report which he wrote against the High Court judgment and against the ASI excavations at Ayodhya. You will feel as if it's an expert of archaeology who is pinpointing के trench case में क्या होना चाहिए था और क्या निकाला है. And then of course, series of works on historiography. Till the end, he was teaching this historical method. He wrote on political and administrative histories. Irfan Habib, who is a man against religion, but you read his perceptive articles on intellectual and religious histories of the Mughal period and the Sultanate period. Not only the Indian history, he edited a volume on two volumes on Central Asian history. So we have his works on West and Central Asian history as well. Quite a few. एक नहीं कि एक आर्टिकल लिख दिया और उसको काउंट कर दिया. Language and writing on Rekhta, on Urdu, in fact, if you want to get an idea, you need not read his entire gamut. I would just ask you to read his book known as Medieval India, published by the National Book Trust of India. Look at the chapters, look at the type of information which is given there. There you will understand. I already mentioned Modern Indian Economy, on which he has written. Anti-colonial resistance, on which he has written. His articles on Marxism, his articles on capitalism, his articles on socialism, his articles on colonialism. In fact, if you look at the number of his edited works in the People's History series, most of the volumes in the People's History series, which were initially published, were not from the field of medieval India, but from modern and ancient period. अभी तो आप वो लिखने जा रहे हैं. Another aspect, I know I have taken much time, but still, just some time more. If you have to understand what Irfan Habib is, you have to understand what type of leadership role he played, at least in 3 institutions which he remained connected with. His role at the Center for Advanced Study. I just alluded that the Aligarh School of Historiography was actually founded by his father, but the Center for Advanced Study go anywhere. I'll just give one example. I went to Paris for a very brief period of time. I wanted to meet one of the very top class historians who was also the director of a national museum out there. Irfan Sahab had said that if you go there, meet that person. So when I reached Paris, जो मेरे contacts थे वहाँ, I said, you see, I want the email address of such and such person I want to meet. You know, most of the persons from whom I inquired, they just shut me off. In fact, one of them said, why waste your time
That person never responds, would never give you time. Abhi last year, such and such person had come from Delhi, stayed in Paris for 6 months, kept on trying to meet this person, never got an opportunity. Chalo tum mangte ho to ye email de dete hain, kuch hoga nahi. I said, you give me the email. I wrote 3 or 4 lines. I am such and such, doing research under Professor Irfan Habib. Irfan Habib, while I was coming to Paris, asked me to meet. I am here till such and such date. This was the content of my letter, and mark me, I was a nobody. But within an hour, I got the appointment, which probably many had been seeking for months, did not get. Aligarh internationally, especially the Department of History at Aligarh, internationally still is known only by his name. You take the name Aligarh and they say, oh, you are coming from the place where Irfan is. So I'm not going into the details. The time nahi hai ki I tell you how he contributed, how whenever he would go, he would, donate not only his books, but those microfilms and microfiche and whatnot to the department library. And whatever the library today is, or the Center of Advanced Study today is just because of people like him. I think that is enough indication. Similarly, the case of Indian Council of Historical Research. He was there as its chairman for a few years. And he contributed to the development of ICHR. For the last many years, the Indian History Congress has emerged as one of the most secular, most prominent group of Indian historians who stand for a secular approach. And one of the basic backbones behind this organization has been till date, since quite a few decades, the personality of Irfan. So one aspect is that he has given his leadership to those institutions with him he has been in close contact. In the end, I'll just give 1 or 2 examples of him as a supervisor. During the tenure that he was at Aligarh, a number of students enrolled under him for doing PhD. The first one of them was MS Ahluwalia at Himachal Pradesh, Shimla. Unfortunately, he died. He was the first research scholar of Irfan Saab. I met him only at a time when he was the professor. Many who were enrolled under Irfan Habib ended up as professors of history. I won't name each and every one of them, but suffice to say that the last 2, the last person who did his research under Irfan Habib, probably who completed research under Irfan Habib. There were others also who registered but could not complete. But the ones who have completed, the last among them is Professor Najaf Haider of JAID. And one of the last before him is the one speaking to you today, myself.
And I can say that the type of training which he gives, most of the research scholars who have worked under him, when they start working under him, have a different opinion about him. And by the time they end doing their work, the perceptions entirely change. I'll just give my own example. So you will be able to understand कैसे वो train करते. For example, when I enrolled under him, Irfan Saab called me to his room, handed me a thick volume, which was, in fact, the photocopy of a manuscript, a rotograph. And as you know, the rotograph means that black paper and white impression of the writing on it, reverse. Written in khatt shikasta, one of these scripts where the dots of the Persian language are not used. अब जीम लिखा है कि चे लिखा है, कि ये लिखा है कि दे लिखा है, नुक्ता ही नहीं है उसमें. हैं भी तो आधे नुक्ते तो इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि वो मॉथ ईटन पेज है, तो उसके जहां पे नुक्ता नहीं भी था वो भी नजर आ रहा है आपको उस पेपर पे कैसे कोई डॉट है. Very difficult to read. In fact, I wasted around 3 months. And after 3 months, I could get only one card made. अब वो भी जबरदस्ती. I went to him, I said, sir, I couldn't get anything. It's only this much. He did not even check what I had noted. He said, ठीक है, you take that other one. He had another manuscript which was with him, the copy of that. He handed it over to me. In short, for the first 6 months or so, he kept on giving me unpublished Persian manuscripts written in different hands. And I kept on laboring without finding any solid evidence as far as my topic was concerned. After going through a number of such manuscripts, I mean, all in tears. ये कौन सा आदमी मैंने चूज कर लिया है जो मुझे कोई सही बात बताता ही नहीं है, ऐसे किताबें दे देता है जिसमें कुछ मिलता ही नहीं है मटेरियल. I was in fact thinking, I was in two minds. बड़ा नाम सुना था कि जो बता देते हैं वो होता है, इसमें तो ये बताते जा रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा मुझे. I'm not getting anything. And out of frustration, when I went to him, sir, I have studied whatever you said and I found nothing. He smiled. He said, I knew from day one that you won't get anything in these manuscripts. And I said, why did you give me, sir? Why did you make me labor? He said, now you know how to read the manuscripts. You know how to read khatt shikasta. I am thankful to Professor Irfan Habib the way what at that time I was thinking that 6 months are being wasted. In fact, he gave me such a training that now the entire life, I'm not going to ever forget how to read the Persian texts. The second way which he taught us was, which is also very different from the modern supervisors, the other supervisors, including myself. Whenever our student comes, we say, read the modern works, ये पढ़ लो, इसने लिखा है, संजय सुब्रमण्यम ने ये लिखा है, मुजफ्फर आलम ने ये लिखा है, J.F. Richards ने ये लिखा है, इरफान हबीब ने ये लिखा है, सारी चीजें पढ़ लो, जब टॉपिक समझ में आ जाए, अब जाके सोर्सेस देखो. The way he trained me was that never read a secondary work. First, read your primary source. There should be no, influence on your mind, because if you read the secondary works, you will be influenced by those, writings, and you would also be looking at your sources accordingly.
No, go with a clean slate, read what is written in the sources of that period, make your own impressions about them, and then go to the secondary works and see how others have tried to interpret them and where you fit in between. That was the type of training which Irfan Habib used to give. So I can say that all those who are trained by Irfan Habib in that particular fashion can never fail in life. And now I stand at the fag end of my career. Only a few years are left for me to retire. That too because I am in a central university. We retired late. But I know that I can always blindly accept any offer which comes to my side. इस चीज पे लिख दो मैं लिख दूंगा क्योंकि the type of training which has been provided by such masters as Irfan Habib, they are not there for everyone available. Lastly, before I close, I'll just point out one thing, that we are discussing about a person on whom there exist at least 2 writings dedicated to him and his life, and one symposium which was held. I am talking about a Festschrift volume, The Making of History, which was dedicated to him in the year 2000. It was edited by K.N. Panikar, Terence Byers, and Utsa Patnaik. It included the writings of 23 contributors, which included people like Romila Thapar herself, and also those who are not identified with the perspectives of Irfan Habib. I am talking about people like Muzaffar Alam and Sanjay Subramanian. They also joined hands to pay tribute to Irfan Habib in this volume published in year 2000, The Making of History. And then in 2011, there was another volume which was dedicated to him as a historian, Excursus in History, edited by Professor, another very important person, Professor Prabhat Patnaik. That was the first work in the series Modern Indian Thinkers. The first series of modern Indian thinkers had this volume with Irfan Habib in the center. And I am proud to say that one of the contributors to this volume, where we pay our tribute to Irfan Habib, was myself also. Lastly, only last year, we had a symposium in defense of history, which was a tribute of the historians to Irfan Habib, organized by social scientist Sehmat and Tulika Publications. Once again, we find big banner names: Romila Thapar, Amya Kumar Bagchi, Aditya Mukherjee, and of course Irfan Habib himself, who delivered lectures during the course of this online symposium. We are hoping that very soon those would be compiled into a book. Sitaram Yechuri and Chief Muswi were also there paying the tribute to Irfan Habib, and the entire session was chaired by Prabhat. Irfan Habib, as of today, is nearing a century. In spite of the fact that he is getting physically old, in spite of the fact that most of the people of his age start forgetting things, but I am very happy to announce here that he is still working, and you should expect that within a few months, his book, a major one, on
Akbar would soon be published. One of the things, the last sentence which I would speak here is that when I was invited to speak on this, I also contacted my supervisor. Sir, you have written so much on every aspect of history. Now, why don't you speak something on yourself, your history? He laughed. He said, Nadeem Miyan, मैं अपने बारे में नहीं बोलता हूँ. I said, आप जमाने के बारे में बोल चुके. अब मेरे ख्याल में आपके साथ 50 साल का हक रखते हुए, I think मैं ये हक रखता हूँ कि आपको मैं फोर्स करूँ कि आप से मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसके जवाब दीजिएगा. I am taking the opportunity of this program to announce that Irfan Saab actually agreed to the proposal, and very soon, if life permits, then we would be recording Irfan Habib on Irfan. Thank you very much. Thank you, Professor Nadeem Rezavi, sir, for wonderful and brainstorming speech. Now we will take some questions. आता आपण काही प्रश्न घेऊयात किंवा काही लोकांना इरफान हबीबांविषयी काही मत मांडायची असेल तर तेही आपण घेऊयात आता पुढचे 5-10 मिनिटं आणि मग आपण थांबूयात. ज्यांना कोणाला प्रश्न विचारायचा असेल त्यांनी ते हँड रेज करायचा आहे किंवा चॅट बॉक्स मध्ये जरी प्रश्न टाकला तर आम्ही तो वाचून सांगू रेजावी सरांना किंवा ते स्वतःही वाचतील इंग्लिश मध्ये असेल तर. Before you articulate your questions, जो आपको पूछना हो, मैं सिर्फ इतना ये कहूँगा कि मतलब मैंने इसकी जुर्रत नहीं की कि मैं इरफान साहब के हिस्ट्री राइटिंग पे लेक्चर दूँ, वो मेरे बस की बात नहीं है. मैंने आपको जो आज बताने की कोशिश की वो ये की कि जो मेरे जो उनसे आपसी संबंध रहे उसमें एज अ पर्सन मैंने उनको क्या पाया. तो आई थिंक अगर आपको उनकी हिस्टोरियोग्राफी पे देखना है, आपको उनकी राइटिंग्स को पहचानना है, तो मैंने अपने आज के टॉक के जो आखिरी चंद लम्हों में जो 2 चीज़ें बताई, मेकिंग ऑफ हिस्ट्री एंड एक्सकर्सस, वो अगर आप देख लेंगे या गूगल सर्च कर लेंगे तो इरफान हबीब के बारे में मिल जाएगा. लेकिन जो पर्सनल टच मैंने, क्योंकि किसी पर्सनालिटी को समझने के लिए जो उसके कलम के बाहर की भी चीज़ें हैं, जो इन्फ्लुएंसेस उस पे जाते हैं, वो एक मुकम्मल इंसान बनाता है. इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया था. Rahul Magar, go ahead. Thank you, Deo. Thank you, sir, for such a wonderful talk. I have just a general question for, specifically suited for our today's environment. We all know how today's social environment India is. So the question is, how should we, as a student of a history, what is the role for the student as us? What is the role for us for today's environment, for today's social environment? And my second question is, how should we, as a person or as a student of history, how should we proceed with this tradition of a Habib? So that's my 2 questions, sir. Thank you, Dev. Thank you, sir. What I would like to answer is very simple, and that is what I attempted to do today, that we should learn from the life of these people, dedicate
we as students of history, or we who are living during the present decades, should dedicate ourselves to two things. One, we should remain loyal to our subject, and two, that we should also remain loyal to the secular, traditions which were developed from Ashoka's period to Akbar's period till date. अगर हम ये दो काम करते हैं, if we remain dedicated to history as a discipline, let us strive in whatever fashion, not to let it be mythologized. मेरी आपकी पर्सनल जिंदगी, मेरे अपने पर्सनल थियोलॉजिकल थॉट्स might be anything, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, whatever, लेकिन इतिहास मत भूलिए कि इतिहास क्या है. अगर आप अपने सब्जेक्ट से किसी भी कंडीशन में, मैं तो अपने स्टूडेंट से भी कहता हूं कि देखिए, हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आने से रोक नहीं सकते. वो एक पॉलिसी जिसमें एक तरीके से हमें आपको विभाजित किया जा रहा है, उससे हम अपने आने वाली जनरेशन को नहीं बता सकते. एक काम कर सकते हैं कि हम इतिहास को इतिहास की तरह उन तक पहुंचाएं, उस धरोहर. और दूसरी चीज याद रखें कि कोई भी हमारी थिंकिंग हो, कोई भी हमारे मसलक हो, जो इंडियन जो तरीका है सोचने का, वो ये कि टू टॉलरेट and to garner all the good points at one place. That is what Sulhekul was. That is what the policy of the framers of the Constitution of India was. Ambedkar जी ने जो Constitution आपके सामने दिया है, वो उसी सेकुलरिज्म को, उसी अप्रोच को जो अशोका से शुरू होके और आपके अकबर के सुलहकुल में नजर आई थी, और जो गांधी जी ने अपने दौर में जो पेश की थी, अगर हम इन दो चीजों से ट्रू रहेंगे तो आई थिंक हम आगे के काम को आगे बढ़ा सकते हैं. आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, लेकिन एक चीज और, तीसरी चीज मैं ऐड करूंगा कि चाहे जो भी हालात हों, हमको डिप्रेस नहीं होना चाहिए. आई हैव येट टू फाइंड इरफान साहब्स मॉरल्स टू बी लॉस्ट. वो अपने वो जो एक रिवोल्यूशनरी अंदाज है, वो अपनी जगह पे बरकरार रहता है, और अपनी बात को बेबाक तरीके से पहुंचाना और कहना, ये चीजें हैं जो हमें सीखना चाहिए, जिस पे अमल करना चाहिए. और आज के लेक्चर, चाहे हम रोमिला थापर को समझने की कोशिश कर रहे हो, चाहे इरफान हबीब को समझने की कोशिश कर रहे हो, यही एक एस्पेक्ट है. इतिहास सभी पढ़ते हैं, इतिहास जाने अनगिनत लोग पढ़ाते हैं. आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनकी इतनी किताबें और राइटिंग्स हैं कि जिनको काउंट करना मुश्किल है, लेकिन उनकी समाज पे छाप नहीं होती. समाज पे छाप सिर्फ उनकी होती है कि जो एक पोजीशन लेते हैं, उस पोजीशन पे उसको बरकरार रखते हैं, उसको पकड़ के रहते हैं, और कोई भी हालात हो जाए अपने सर को नहीं झुकाते. These are some of the things which I think would take us forward. ये पासिंग फेज है, गुजर जाए. Sir, according to Professor D.N. Jha, Irfan Habib is a marked block of India. What is your take on it? Well, I mean, जाहिर है कि डीएन झा अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही कह रहे हैं. जहां तक मेरा अपना ख्याल है, अब मार्क ब्लॉक से कंपेयर किया जाए इरफान हबीब को कि किससे कंपेयर किया जाए, ये याद रखा जाए कि मार्क ब्लॉक ने भी जिंदगी पे खेल के और असलियत को हमारे सामने पेश करने की कोशिश की थी. लेकिन जरा दबे छुपे अल्फाज में इरफान हबीब जो है आज भी
ऐलान करके और लाउड स्पीकर हाथ में लेके जो सच बात है उसको बोलते हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि किसी को किसी और स्कॉलर से कंपेयर ये कहा जाए कि जो रोमिला थापर एंशिएंट की हैं वो इरफान हबीब मिडिवल के हैं, तो सब अलग अलग हैं, सबका अपना अपना है। लेकिन इरफान हबीब वो हिस्टोरियन है जो निडर है, जो अपनी सच्चाई को, जहां से मैंने शुरू किया था कि वो एक मार्क्सिस्ट है और हार्डकोर मार्क्सिस्ट है। वो मार्क्सिस्ट है कि जिस वक्त मार्क्सिज्म से लोग बच के भाग रहे थे और ये समझ रहे थे कि ये तो अब लॉस्ट केस है, उस वक्त भी उसी दृढ़ता से इरफान हबीब मार्क्सिस्ट थे जैसे शुरू में थे। लेकिन उसके बावजूद कोई अगर ऐसी बात थी जिससे वो एग्री नहीं करते थे, अगर आप उनकी राइटिंग्स उठा के, जो मार्क्सिज्म पे जो इरफान हबीब की राइटिंग्स है आप उनको उठा के पढ़ें, तो कई मौके ऐसे हैं कि जहाँ पे अपने ही गुरु कार्ल मार्क्स को वो कहते हैं कि नहीं ये देखिए उन्होंने ये नहीं पढ़ा था, उन्होंने ये नहीं देखा था, अगर यहाँ ये तरकीब, बेसिक जो बात थी उनकी अपनी जो अप्रोच थी वो वही आज तक रही। लेकिन जहां तक अपने ख्यालात थे उनको बगैर किसी डर के, यानी आप माफ कीजिएगा, जो अगर पार्टी होल्डर, जो रेड कार्ड होल्डर होता है, वो उस पार्टी के किसी चीज को क्रिटिसाइज करने में बड़ा बचता है, लेकिन हेयर इज अ पर्सन जो किसी चीज से नहीं डरता है और जो हक है उसको कहने में निडर रहता है। यही एक इरफान हबीब है जिससे हमको सीखना चाहिए। मैं शौक है। ओके, इसी को आगे बढ़ाते हुए, मतलब इरफान हबीब साहब का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है या संशोधन पद्धति, और वो हार्डकोर मार्क्सिस्ट है, वो हमको उनके टेक्स्ट में और सब लिखानों में तो दिखता ही है। मगर जो उनके स्टूडेंट्स हैं या उनके चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने वो जो संशोधन पद्धति है, वो जो थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म और रिसर्च मेथोडोलॉजी, वो कहाँ तक वो समझ पाए, या वो क्या दिखता है आपको, वो आगे जा रहा है वो संशोधन पद्धति जो भी इरफान हबीब साहब ने एक्वायर किया था? आप जो आपका सवाल है वो बहुत ही अहम है, और जो आप जहाँ पहुंचाना चाहते हैं मुझे, आप बिल्कुल नहीं नहीं। आपने मुझे आप पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि देखिए दो चीजें। एक चीज मैं क्योंकि इस वक्त मैं उन लोगों पे कमेंट नहीं करूंगा जो उनके काम को कितना आगे बढ़ाया या मार्क्सिज्म को समझा कि नहीं समझाया, कितना उन्होंने तोड़ दिया या क्या किया। एक चीज मैं बस ये कमेंट करूंगा कि इरफान हबीब ने कभी भी किसी अपने रिसर्च स्कॉलर पे कोई अपना छाप थोपने की कोशिश नहीं की। मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। देखिए मैं आज एक लेफ्ट ओरिएंटेड हिस्टोरियन की तरह जाना जाता है, लेकिन अगर आप मेरी हिस्ट्री उठा के देखें तो मेरे वालिद एक सर्टिफाइड मुल्ला थे। ही वॉज अ थियोलॉजियन, और जैसे खुमैनी का आप ड्रेस देखेंगे वो पहने रहते हैं, वही मेरे बाप का था। और जाहिर है कि जो घर में मेरे माहौल था वो कैन अंडरस्टैंड कि वही था। मेरे बाप ने मुझे इरफान हबीब तक पहुंचा दिया और कहा कि अब इनको आप तारीख पढ़ाइए जैसे भी पढ़ाना है, और उनका इंतकाल हो गया। इरफान हबीब, मुझे नहीं याद इस पिछले 40-50 साल में कभी उन्होंने मुझसे कहा हो कि तुम्हें पार्टी ज्वाइन करनी है या पार्टी का ये काम करना है, ये देखो कार्ल मार्क्स ने ये कहा है और तुम ये कर रहे हो। मैं मुहर्रम में घर भी जाता हूँ और अपने जो मेरे कल्चरल ट्रेड्स है उन सबको करता हूँ। कभी अगर मैंने बुलाया तो आ भी गए, है ना। कभी उन्होंने इम्पोज, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातों को वो उन्होंने मुझ तक पहुंचाया, और इतना पहुंचाया कि आज मुझे नहीं मालूम कि मैं अगर
मेरे बाप कब्र से निकल के आ जाए वो और इरफान हबीब खड़े हो तो मैं किधर ज्यादा झुक रहा हूँ, उधर हूँ कि इधर हूँ, ये तो लोग फैसला करेंगे। लेकिन मुझे अपने बारे में यकीन है कि आई एम मोर लाइक माय सुपरवाइजर देन आई कुड हैव बिकम। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद यही उन्होंने अपने सारे रिसर्च स्कॉलर्स के साथ ट्रीटमेंट किया होगा, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं। लेकिन जाहिर है कि एक बड़ी पुरानी मसल है कि जो प्याला होता है उसमें कितनी गुंजाइश है वो पोर करने वाले की गुंजाइश पर नहीं डिपेंड करता है, आप में कितनी ताकत है, वसअत है, उसमें डिपेंड करता है। जाहिर है कि बहुत से ऐसे इरफान हबीब के पढ़ाए पे रिसर्च स्कॉलर्स हैं और गुजरे हैं कि जिन्होंने इनफैक्ट उस लाइन को नहीं टो किया जो मोहम्मद हबीब या इरफान हबीब की थी। यहाँ तक के जो आज सेंटर फॉर एडवांस स्टडी उनके नाम पे जाना जाता था, जो एक खाली ढोल है, हूँ मैं वहां, लेकिन मैं आपसे हकीकत बयान कर रहा हूँ, इट्स ऑल पास्ट। Unfortunately, in spite of all which these greats did, it was not only Irfan Habib or Muhammad Habib, there were people like Nurul Hasan, there were people like a number of other, but unfortunately, most of it has not rubbed off the modern age historians. In fact, there are quite a few of his students which are going a contrary line. तो हाँ, यहाँ पे जरा सा जरूर है, लेकिन इसीलिए मैंने आज सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि दुनियादारी से बेहतर ये है कि हम इरफान हबीब की तरह, जो एक अबुल फजल लिखता है अकबर के बारे में कि जब उसने इबादत खाना डिस्कशन वगैरह होल्ड करना शुरू किए और पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उसने जवाब दिया था कि मैं असली हक को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, the truth, to find out the truth. Possibly this is what just like Akbar, Irfan Habib did, and each of us should try to reach that truth instead of pinpointing fingers at each other. Yes, thank you, sir. वर्षा. सर, मैं ये पूछना चाहता था कि मतलब आप थोड़ा इससे प्रकाश डालेंगे कि इरफान हबीब साहब का अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उससे कितना मतलब लगाव के बारे में और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस से कैसे उनका लगाव है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और आई थिंक के टाइम की कमी की वजह से मैंने सोचा था कि इसके ऊपर भी कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन ये कि जाहिर है कि पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम था और एक ऐसी पर्सनालिटी को समअप करना हर चीज वो बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा हुआ आपने ये पूछ लिया। इरफान हबीब को अगर आप देखें, अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम 2-3 जगह से पढ़े हुए होते और ख़ास तौर से अगर यूरोप और अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए होते तो शायद बहुत बड़े स्कॉलर बन जाते और हर वो इंसान जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की डिग्री लिए बैठे हुए हैं या बहुत बड़े कॉन्वेंट में एजुकेट होके आया है वही एक स्कॉलर बन सकता है। इरफान हबीब की ज़िंदगी ये शो करती है कि ये सब बातें मनगढ़ंत और गलत है। इरफान हबीब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा स्कूल है जो जिसकी कोई ख़ास हैसियत नहीं है। इवन अलीगढ़ के स्कूलों में उसको बहुत अच्छे जगह पे पेडेस्टल पे नहीं रखा जाता है। हो सकता है कि आज़ादी से पहले कुछ बेहतर रहा हो, लेकिन तब भी बहुत ही उसका एकेडमिकली बहुत हाई स्टैंडर्ड। बहरहाल इरफान हबीब की तालीम वहीं से हुई, उर्दू मीडियम से हुई
उसके बाद उन्होंने बीए में एडमिशन लिया और फिर एमए में लिया, और यहाँ तक के सारी पूरी एजुकेशन करने के बाद फिर वो बाहर गए, जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ बाहर जाके उन्होंने अपने रिसर्च को कंप्लीट किया, और रिसर्च कंप्लीट के बाद इनके पास जाने कहाँ से ऑफर थे, लेकिन ये सबको छोड़ते हुए अलीगढ़ आ गए। अब जाहिर है कि उस जाने में इनके पास कहाँ ऑफर थे कहाँ नहीं थे, वो तो सिर्फ मैं तो आपको सुनी सुनाई बता सकता हूँ। मैं तो उसको बिलीव करूंगा जो मैंने अपने आंखों से देखी है, और मैंने अपने आंखों से ये देखा है। और मेरा, जैसे मैंने कहा कि सन 77 से 77 से मैं इनको बहुत क्लोजली देख रहा हूँ, और इत्तेफाक से सिर्फ ये 2 साल पैंडेमिक के हैं जिसमें इरफान हबीब डिपार्टमेंट नहीं आए, और इसलिए बहुत कम मुलाकात हुई, वरना तो कोई दिन ऐसा नहीं था जब दिन का ज्यादातर आवर्स ऐसे होते थे कि इरफान हबीब की खिदमत में हम लोग होते थे। तो उनको बहुत क्लोजली हम लोगों ने देखा, और ये देखा कि एक से एक इनके पास बार बार ऑफर्स आई अलीगढ़ को छोड़ के जाने के लिए। बड़ी बड़ी पोस्टें भी इनको दी गई, यहाँ तक कि जिस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट तबके ने अलॉन्ग विद सर्टेन टीचर्स, उनमें से कुछ डिपार्टमेंट के भी थे और कुछ बाहर के थे, उन्होंने ये फैसला किया कि इरफान हबीब जैसे आदमी को कैंपस पे एंटर नहीं करने देंगे, डिपार्टमेंट पे एंटर नहीं करने देंगे। बावजूद उसके, जबकि उनके जानने वाले उनसे ये कह रहे थे कि आप को ऑफर है कहीं पे वाइस चांसलर बनने का, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। He never agreed to go out. Even at the time when he became the chairman of the ICHR, एक शर्त पे उन्होंने चेयरमैनशिप ICHR की ली थी, और वो ये ली थी कि मैं हफ्ते में 2 दिन आऊंगा, अलीगढ़ में रहूंगा। तो एक इनकी एक लॉयल्टी जो अलीगढ़ से रही, वो स्टूडेंट एज से लेकर बीच बीच में बस उतना सा वक्फा कि जितने दिन इनके लिए जरूरी था ब्रिटिश लाइब्रेरी और दूसरी जगह पे जाके अपने कलेक्शन ऑफ मटेरियल कर सके जितना नेसेसरी था। इवन इन दैट ही नेवर वेस्टेड हिज टाइम, ही नेवर प्रेफर्ड टू गो आउट ऑफ अलीगढ़, एंड ही प्रेफर्ड जो अलीगढ़ की तंग गलियां, अलीगढ़ की तंग नजरी, और यहाँ पे जो उन्होंने टाइम डिवोट किया, यहाँ के 4th ग्रेड एम्प्लॉइज, ये एक एस्पेक्ट था जो मैंने आपके सामने नहीं पेश किया, कि पूरी जिंदगी दिन में तो ये पढ़ाते थे और सब काम करते थे, और शाम को एक एम्प्लॉइज यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन ये बनाए हुए थे कि जिसमें जाके ये जो थे हमारे वर्किंग क्लासेस हैं उनकी खिदमत किया करते थे। मैं एक आखिरी में आपको एग्जांपल दे दूं, और ये मेरा देखा हुआ है कि एक अपने ही डिपार्टमेंट के एक चपरासी पे चार्ज लगा के उसने फला फला काम किया है, और एस चेयरमैन इरफान साहब के पास कोई और चारा नहीं था उसको सस्पेंड करने के अलावा। सो इरफान हबीब एज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंटर एंड चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री सस्पेंड, और फिर उससे सस्पेंड करने के बाद ये कहलवाया, हम लोगों से कहा कि उनसे कहिएगा जरा यूनियन के दफ्तर में आके मुझसे मिल लें। तो वो शख्स बड़ा डरता हुआ उनके पास पहुंचा कि सस्पेंड तो कर दिया गया हूं, अब जाने ये क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अपने कागज लाए हो जरा दो, और बैठ के उसका जवाब लिखा टू द चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। वो बेचारा जाहिर है कि जाहिल था, वो जो शो कॉज उसको दिया गया था उसका जवाब वो नहीं खुद लिख सकता था। इरफान हबीब ने खुद ही शो कॉज दिया, सस्पेंशन की रिकमेंडेशन की, और खुद ही उसका जवाब ड्राफ्ट करवाया, और दूसरे दिन उसके ऊपर बैठ के उसको आगे बढ़ाया, उसको माफ की। ये पूरा उनका एक तरीका, लेकिन he never preferred to go out of अलीगढ़। और आज भी in spite of everything उन्होंने अपने जो जैसे
कर्म भूमि आप कह सकते हैं कि जो अपनी तय कर रखी है, जिसको वो उनके पास ऑप्शन था उसको बार बार हटाने का, वो अलीगढ़ ही है और अलीगढ़ ही में वो रहे और अलीगढ़ से ही वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अलीगढ़ को इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी खासी जगह जहाँ इतिहास पढ़ाया जाता है, वहाँ पे अलीगढ़ के इतिहास को इरफान हबीब से जोड़ के देखा जाता है और शायद यही रीजन है कि दोनों में कोई फर्क नहीं हो, वो आज भी छोड़ने को तैयार। आपण एक शेवटचा प्रश्न घेऊयात. शेवटचा प्रश्न कोणाला असेल तर तो घेऊया आणि मग थांबूयात. सर एक आखिरी का सवाल लेते और आज ज्यांना कोणाला प्रश्न असेल त्यांनी अनम्यूट करा आणि डायरेक्ट प्रश्न विचारा किंवा मग हात रेज. सुवर्णा विचार डायरेक्ट. ते कुतूल शाळेच्या ह्याच्यावर टेक्स्ट केलं होतं ऍक्च्युली. मग तू विचार सरांना डायरेक्ट आहे तिथे. सर मुझे सर आपने बोला कि आपकी एज ए रिसर्चर जर्नी कैसे रही इरफान हबीब के साथ, तो प्राइमरी रिसोर्स का जो मुद्दा है वो बहुत ही मुझे डिफिकल्ट लगता है कि जो नॉन इंग्लिश या क्या बोलते एकेडमिक में आते हैं सोशल साइंस में विद्यापीठ स्तर पे, तो वहां पे उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब एक तो प्राइमरी रिसोर्सेस पढ़ने में जो टाइम लगता है वो नहीं रहता है, तो इसलिए वो टर्न सॉरी टर्न होते हैं जो बाइलिंगुअल रहते हैं टेक्स्ट उस पे। तो मुझे ये मतलब बहुत बार बोला जाता है कि प्राइमरी ही पढ़ना चाहिए, तो आपका जो इंटेलेक्चुअल है या आपका जो थ्योरी है वो अच्छे से डेवलप होती है। पर मैं खुद की भी जर्नी रही है मेरी ऐसी स्ट्रगलिंग, तो मैंने काफी सेकेंडरी रिसोर्स से ही मेरे जो आइडियाज है वो डेवलप हुए हैं। तो अभी भी मैं पोस्ट डॉक के लिए जब इसका सॉरी नाम भूल गई, तो हैबिटस वगैरह इसका जो पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो काफी डिफिकल्ट होता है वो समझने में कि एक्चुअली बोर्डिंग क्या बोलने की कोशिश कर रहा है हैबिटस में, तो वो उसको कैसे हम डील करेंगे। और अगर हम सेकेंडरी पढ़ते हैं, मतलब हैबिटस का ही अगर मैं सेकेंडरी रिसोर्स पढ़ने जाती हूँ तो मुझे इजी लगता है, तो इसको हम कैसे देखेंगे या रिसर्चर और कैसे डेवलप करें हम प्राइमरी रिसोर्स तक पहुंचने के लिए। सुवर्णा जी थैंक्स अ लॉट। आपका जो प्रश्न है वो बहुत से जो इतिहासकार हैं उनको तंग करता है कि एक तरफ उनसे कहा जाता है कि आप जो जिस पीरियड का इतिहास आप लिख रहे हैं उस पीरियड के जो जबान है सोर्सेस की उसको पढ़ें, और मसला तो ये है कि कैसे आदमी सीखे आजकल उस जबान को। जो आपने प्रॉब्लम बयान की बहुत कॉमन है। एक चीज और है कि अगर आप ज्यादातर किताबें देखेंगी जो आज छप के आ रही हैं या वर्क हो रहे हैं या पीएचडी हो रही हैं, उसमें अच्छी खासी तादाद उन वर्क्स की हैं कि जो सिर्फ अंग्रेजी के ट्रांसलेशन से बेस करके किए जा रहे हैं, और उन्हीं के बेसिस के ऊपर थेरीज बनाई जा रही हैं और उन थेरीज को पॉपुलर किया जा रहा है, और बहुत सी थेरीज उसमें से बहुत से वर्क तो बहुत ही पॉपुलर हुए जा रहे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है कि ये हो रहा है। मेरा भी अपना ख्याल ये है कि देखिए ट्रांसलेशन क्या चीज,
Suvarna ji, translation itself is an interpretation, one type of interpretation. I mean, you have, for example, asked this question. You had an intention to ask this question, but I have understood it only as per my intention, per my limitations, per my understanding. अब जिया बर्नी ने क्या लिखा था, अबुल फजल ने क्या लिखा था, उसके पीछे आप जानती हैं लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होती है। किसी भी भाषा का कोई भी वर्ड होता है, उसका एक मतलब नहीं होता है, उसके बहुत से मतलब लिए जा सकते हैं। तो ट्रांसलेशन करना बहुत आसान काम नहीं होता है, वो 2+2 नहीं है ना। बाज़ दफा जो ऑथर, I'll give you an example, कि अमीर खुसरो जी लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब दक्कन गए तो दक्कन की सरजमीन जो थी वो एक तरीके से खुशियों से लाल हो गई, जो सुर्ख हो गई। What he actually meant was sarcasm. Much bloodshed had taken place. मतलब उनका उधर था इशारा, लेकिन जो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं वो लिटरल होगा, दूसरी चीज। तो पहली चीज तो ये होती है कि जो एक्चुअल सेंस है उस जबान में, ट्रांसलेशन में उसका सिर्फ एक सेंस आता है। यू लूज दी अदर सेंसेस। हो सकता है कि कुछ और मुराद रही हो, लेकिन यू आर नॉट एबल टू गेट इट जब तक कि आप अपने टेक्स्ट को उस नजर से दोबारा नहीं पढ़ते, तब आपको वो नजर आने लगे, है ना। एक चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि ट्रांसलेशन बाज़ दफा डिपेंड करता है उसकी सलाहियत पे कि जो ट्रांसलेट कर। मैं आपको एक बहुत मोटी सी एग्जांपल दूंगा, अगर आप मिडिवल की हैं, आई डोंट नो if you are Suvarna ji from medieval, so you will understand that you know Muntakhabut Tawarikh of Mulla Abdul Qadir Badai, that has been translated by a very well known translator in the early part of the 20th century. शायद उस वॉल्यूम का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ रैंकिंग ने ट्रांसलेट किया। आई माइट बी रॉन्ग, 3 अलग अलग ट्रांसलेटर्स हैं, शायद जिस टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ उस पर रैंकिंग। अब जब ये अंग्रेज ट्रांसलेट कर रहा था तो उसने ये, अब आप जानती हैं फारसी, अरबी, उर्दू तीनों में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो नुक्तों पे डिपेंड करते हैं। डॉट्स ऊपर पड़ी है तो नून है, और नीचे पड़ी है तो बे है, और 3 नुक्ते पड़े हैं तो चे है, और एक पेट में पड़ा है तो जीम है ना। उसके बगैर आप पढ़ नहीं सकते। और उस पे जो मद और जेर होते हैं कि कहाँ ए करके पढ़ना है तो मतलब बदल जाएगा, ओ करके पढ़ना है तो मतलब बदल जाएगा। अब जो हमारे ट्रांसलेटर मुंतखबुत तवारीख को ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने एक ट्रांसलेशन दिया जो जब मैं अपना काम कर रहा था तो मैंने, हर आदमी सोचता है काहली में कि चलो कौन जाके फारसी में पहले सर खोपेगा, ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं, फौरन जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो मैंने एकदम से मुझे मिला, और क्या मिला उसमें, ये मिला कि अकबर के पीरियड के बारे में एक साहब का जिक्र था कि वो मुसलमान नाम कि वो महादेव के मानने वाले थे। He was a follower of Mahadev. This was written. अब जाहिर है कि अकबर के पीरियड का जिक्र हो रहा है, जहां सुलह कुल, हिंदू मुस्लिम एकता, तो होगा कोई मुसलमान, कोई नोबल जो महादेव को मानता होगा। नथिंग वेरी स्पेशल। बहुतों ने वैसे ही उसको यूज किया, और मैं भी कर रहा था, लेकिन मालूम नहीं कहाँ से दिल में आया कि यार ओरिजिनल तो देखना क्या दिया हुआ है।
अब जब ओरिजिनल पे गए तो पता चला कि वो महादेव नहीं है, इट इज महदविया, द महदवी मूवमेंट व्हिच वाज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग। तो अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पे बेस करता तो मैं तो कहां से कहां पहुंच गया था, है ना। तो बेटर ये है कि जो लैंग्वेज ऑफ द सोर्स है, अगर आप उस पर बेस करके आप काम करेंगे तो आपका काम में पिटफॉल्स कम। नंबर 2, एवरीथिंग हैज नॉट बीन ट्रांसलेटेड उसी पीरियड में। एक दो सोर्स ट्रांसलेट हुए, बाकी और भी उतने ही अहम सोर्सेज हैं, लेकिन उनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो जो रिसर्चर बगैर लैंग्वेज सीखे हुए काम कर रहा होगा, सिर्फ फॉर एग्जांपल अंग्रेजी पे डिपेंड कर रहा होगा, तो वो तो एक सोर्स पढ़ पाएगा, बाकी को तो फिर कहाँ से थ्योरी उसमें बना लीजिएगा, जबकि काउंटर इंफॉर्मेशन और मौजूद। तो इसलिए ये कहा जाता है कि और आप देखेंगे अगर कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड चले जाएंगे तो ये अंग्रेज जब रिसर्च करते हैं तो पहला साल उनका डेवोट होता है सिर्फ उस लैंग्वेज को सीखने में जो उनके लिए जरूरी है। वो सिर्फ फारसी नहीं, अगर मिडिवल कर रहे हैं तो उसमें मराठी भी है, उसमें राजस्थानी भी है। अगर आप एक 17th सेंचुरी के बारे में आप लोकल लेवल पे पढ़ रहे हैं तो मराठी में डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, यू हैव टू नो मराठी। राजस्थान के बात कर रहे हैं तो यू हैव टू रीड राजस्थानी। तो ये जो भी लैंग्वेज ऑफ द सोर्स है वो आप जब तक नहीं सीखिएगा तो जिसे आप डिस्टिंग्विशिंग वर्क है वो नहीं कर सकते। ट्रांसलेशन एक वन साइडेड सॉलिटरी एविडेंस देता है, इसके अलावा नहीं। तो आई थिंक सुवर्णा जी, अगर ये प्रॉब्लम है और जाहिर है कि हम सब फेस करते हैं, लेकिन ये ऐसी प्रॉब्लम है कि जो आई थिंक के ओवरकम करना चाहिए। अभी भी टाइम है, सीख लीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता किसी भी जबान को सीखना। थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन बगैर उसको सीखे हुए मेरे ख्याल में अच्छा वक्त कर रहे हैं, मतलब स्ट्रगल तो कर रहे हैं एंगेज को। जी जी। आता आपल्या कुतूळ शाळेचे सहध्यायी मित्र राहुल मगर आजच्या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करतील। राहुल। थैंक यू देव। सबसे पहले मैं प्रोफेसर रेजावी सर का धन्यवाद अदा करता हूँ। सर थैंक यू, आप यहाँ पे आए और आपने प्रोफेसर इरफान हबीब जी के ऊपर एक ऐसा लेक्चर दिया, ऐसा टॉक दिया कि जो हम लोग को हबीब साहब सिर्फ जो किताबों से समझते हैं वो आपने आपके एक्सपीरियंस से, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग को समझाया, उनकी लाइफ जर्नी हम लोग को समझ आई। इसलिए मैं सबसे पहले आपको थैंक अदा करता हूँ। और इसी के साथ मुझे जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें कई सारे प्रोफेसर्स है, कोई मतलब बाहर की यूनिवर्सिटीज के है, बहुत सारे पुणे यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कॉलेजेस के प्रोफेसर है। मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं सबको यहाँ पे उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। जो पार्टिसिपेंट्स है उनको भी थैंक यू बोलता हूँ। और आपसे एक और विनती होती है कि अगर आप लोग कुतूहल शाला से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर, हम लोगों ने नंबर और ईमेल आईडी शेयर किए, आप उसके ऊपर हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर और थैंक यू ऑल। So I think Dev Kumar, we can end the call right now. Yeah, thank you everyone. Thank you everyone. Thank you.